So, so let us start with the practical session. Okay, as I told you that this is our practical, and this will be our practical session. Okay, so on Tuesday we'll be having practical from 12 to 1. Okay, so if we talk about the list of experiment, then it was already shared with you people. This is the this is a list of experiment what I shared with you on Google Classroom, and I think we have completed the first four. Okay, first, second, third, and fourth. Last time we have done design a navigator for a person new into the city. I don't know that you people have worked out or not, or you people have drawn it or not. Okay, but that will be reflected in the assignment what I have given you. That is the experiment you have to submit along with the write up and along with the output you have to submit it. Okay, so hope you people are doing it and you have done it. Okay, because I think the 12 no the last date I think I kept it on 12th of March. Okay, so you are still have time. Okay, so you can do it. So do it as well as possible in order to avoid any inconvenience. Okay, because it will affect your marks also. Okay, so the things are simple. When the things are simple and the group activity, you don't have to take a lot of time. You can submit it as early as possible. Okay, so in this particular experiment, all the as I told you that all the experiments are very very simple. You just need to discuss among your members, and then you need to decide on one design and just make it and take out the theory part and just do it. Okay, so that's a very simple one. If you do uh, at least if you will take out only 30 minutes, then you can cover up all the things regarding one experiment. Okay, for one experiment you can do. So let's start with the fifth one, that is kiosk design. Okay, so let me ask you people, what do you understand by kiosk design? Okay, and where you have seen it, I need answers from your side. Almost 16, 17 students are there, so I need answers from your side. What is kiosk design? Mall. Very good. In mall. और बोलो, मॉल के अलावा आपने कहाँ देखा? आई थिंक माय स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर्ड बैंक. दैट्स गुड. बैंक के अलावा और कहाँ कहाँ हो सकता है, ये भी आप लोग बता सकते हैं. ऑफिस. वेरी गुड. एयरपोर्ट. गुड. हॉस्पिटल्स. एक एयरपोर्ट्स. गुड. एंड वन मोर ऑप्शन इज देयर. आई थिंक यू आर मिसिंग इट. स्ट्रेट. साइडवेज. बोलते जाओ. whichever thing is come in your mind, you can just express. Station, railways. Good. ATM, schools and colleges. Very good, Dishan. I was just expecting case कोई ये बोले school and colleges, or you can say campus. Okay, so we can have we can have a kiosk design in our campus because we this is the integrated campus. Our campus is the integrated campus, and our campus consists of diploma, pharmacy, architecture, engineering. In engineering, we have five branches along with the first year department, then administrative department, exam cell. Okay, so lot of departments, security, maintenance, and these departments are okay. And we have a lot of labs in each and every school. Like in school of engineering computer department, we are having almost 9 labs, staff room plus pantry and all that, incubation cell and all. So if there is someone, or if there's any person who is new in our college, in our campus, then by this particular kiosk design we can. अच्छा, मैं आपको डायरेक्टली पर्पस बता दे रहा था. So now after this one, can anyone tell me what is the purpose, and basically what is the purpose of this kiosk design? One second.
Sorry for the inconvenience. Actually, I was discussing with your faculty. So sorry again. Sorry. Okay, so regarding kiosk design, okay, what is the purpose? I was asking you people that what is the purpose behind this kiosk design? Why these kiosk design are situated in universities, school, colleges, hospital, bank, ATM, railway station, airport, street, sideways. So ये यहाँ पर क्यों होते हैं? What is the purpose? Virtual, good, informative and business purpose. Very good. Information for information also, selling their product, good, selling their product, okay, is it means के business purpose, okay, marketing, business, advertisement, okay, and self service, okay, good. uh, और बोलो मुझे आंसर्स अच्छे लग रहे हैं आपके। और जो बाकी लोग हैं जो उन लोग भी आंसर्स कर सकते हैं, जितना जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना आपस में तो उतना आप लोग के लिए सिंपल हो जाएगा। And I think by just looking at this particular diagram, you can understand what is the kiosk design. That is the screen point of view. We have one product green as पता नहीं क्या लिखा है. I cannot read it. आप में से किसी ने कुछ बोला अभी. I have not read it actually. Attract customer, very good. Attract customer, self service, selling their product, informative and business purpose, virtual map. Okay, all the advertising, boost process. Good, good. All the answers are correct. Okay. It means that you people have already used it. Okay. कि kiosk design आपने कहीं ना कहीं देखा होगा and you people have used it. So basically, if you will situate the kiosk design in any campus or any institutional or educational institution, then it can be used for the purpose of showing that we are having this lab, we are having this highly equipped lab, okay, and we are having huge area, and we're having this lot of sections. We are having this school of architecture. We have visited like this. We have a topper, the list of topper. This all the information can be. The purpose of showing all this information is that के सामने वाला attract. Some of from your side just told out कि ये attraction के लिए है basically student मतलब जो लोग students आएंगे, the parents, the stakeholders. In short, I say the stakeholders were coming. So for them, okay, to attract those people, these type of designs are situated. Okay. आई थिंक आप में से किसी ने नोट डाउन किया होगा कि नहीं पता नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बाजू में जो स्टेयर केस के ऊपर जाते हैं हमारी ओल्ड बिल्डिंग फार्मेसी बिल्डिंग, तो एडमिन डिपार्टमेंट जहाँ आपको लाइन लगा के बोनाफाइड लेते हैं, रिपोजिशन लेते हैं, उसके बाजू में जहाँ स्टेयर केस उसके बाजू में एक छोटा सा वहाँ पर एक मैप था। ओके, सो दैट मैप इज यूज टू फाइंड समबडी, अगर कभी एक जगह पर है तो वहां से कहीं जाना है तो कैसे जाना है, तो सारा एक वर्चुअल मैप था। तो वो एक छोटा सा, हाँ यू आई थिंक यू हैव सीन। तो वैसा एक डिजाइन था। हमारे पास कोई कियोस्क डिजाइन तो नहीं है, बट कियोस्क डिजाइन तो हाईली इक्विप्ड होते हैं, दे आर लाइक टच स्क्रीन होते हैं, एंड ऑन द टिप ऑफ on fingertips you can find all the information regarding anything. So ये तो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। इफ यू आर गोइंग टू एनी हॉस्पिटल then they can situate a kiosk design. Okay, so we are having this number of beds, we are having these facilities, और हमारे पास में इतना बड़ा एरिया, इतने इतने बेड है, इतने इतनी फैसिलिटी है हमारे पास में। So all those things can be done. Okay, and you can easily find out. Okay, this is regarding information, what these people are having, what you want to do. Okay, so this is regarding informative section. The second section is इससे उनकी तो बिजनेस भी हो रहा है और इसमें उनका फायदा भी हो रहा है। इंफॉर्मेशन और भी निकल सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू गो टू सेक्शन, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और या फिर बहुत बड़ा कॉलेज है, एंड यू वांट टू गो टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग के अंदर आपको कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाना है, वो भी आपको लैब नंबर 2 में जाना है। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट हियरार्चिकल, काफी काफी इन डेप्थ है। तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो हाउ आई कैन गो, तो आपको पूरा मैप बता सकता है यहाँ से आपको जाना है, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वहां से राइट, वहां से लेफ्ट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन आप निकाल। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कियोस्क डिजाइन। यू कैन सी यहाँ कुछ प्रोडक्ट शो कर रहा है, इन लोग शो कर रहे हैं। आई थिंक सम ऑफ द पीपल विल बी देयर। कियोस्क डिजाइन बेसिकली कोई मतलब के सेल्फ ड्रिवन होता है। यू कैन यूज इट, नोबडी इज देयर, सो यू हैव टू यूज इट। कियोस्क डिजाइन और भी जगह होते हैं, मॉल्स में होते हैं। आई थिंक पीपल हैव सीन, कहीं पर लोग होते हैं, कहीं पर होते हैं, नहीं भी होते हैं। सो ये ऐसा एक कियोस्क डिजाइन है। ठीक है, so I think people have you have a clear you are clear about the kiosk design. Okay,
Now it will be very simple for us to design a kiosk, design for any institution, for any hospital, or for any bank. Okay, whatever you are considering. So what experiment we have right now is that we have to kiosk design for hospital. We have to make a kiosk design for hospital slash school slash educational campus slash national institute. Okay. You can consider any other place also, like you are going to mall. You can consider mall. You're going to a national library. Okay. You are going to museum, or you are going to any park. You're going to national park. Okay, so like these are the places where the kiosk design are applicable. Okay, so we can make a design for, we can make a kiosk design for these places. Okay, so now I think this is clear what you have to do. Okay, now let me show you one sample output of the last year. Okay, what they have made. Okay, so you will get an idea. So इतना ऐसा भारी वाला kiosk design हम लोग कैसे बनाए, इतना ही बनाए जितना हम लोग से बन सकता है, तो हम लोग kiosk design बनाएंगे. But that kiosk design must include each and everything what user is expected. Okay, let me present you the output of the last year, what they have made. This is a kiosk design for hospital, school, educational campus. Okay, so this is the one which is for the hospital. Okay, hospital kiosk. Okay, new patient, they have provided like some kind of buttons are there. So if there is a new patient, then the person who is coming over here will click, will push, will will touch this particular button that the new patient has arrived. So what are the requirements of the new patient when you are entering, when the new patient is entering into the hospital, then what are the requirements, where it has to, where he or she has to contact, or where, what he has to do, what is the procedure. So each and every information will be there in the new patient section. Okay. So this is how they have provided new patient. Then find one. Okay. Your patient is in. You are the visitor. You are the visitor, and you want to visit the ICU section. Okay. You want to go in the ICU, intensive care unit. So you can find the ward also. Okay. Where your patient is right now actually situated, and and how you have to go. So each and everything will be there in the find ward. Emergency, okay, maybe emergency if there is a newly arrived patient, but having emergency, accident case hai, attack case hai. Okay, so in that case what they have to do, emergency फटाफट push करके या फिर किसी को contact करके पूछ सकते हैं. So they have just provided, in case of emergency, so people directly approach to the reception only. वहाँ पे कोई नहीं है, तो for an emergency पे किसी को contact करना है, some information, some contact or some extension will be there so that we can easily contact the person if he or she, the reception is not present in the reception. रात का time है कुछ ऐसा है. Check-in, direction, information, though they have provided information according to their intelligence, according to their experience. Okay. I think you all have visited hospital, bank, mall, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सब जगह आप में से हर किसी ने विजिट किया है. सो यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द सेक्शन, कहाँ पर क्या होता है, कैसे करना होता है, कब करना होता है, क्या चीज होती है. सो यू हैव ऑल द आइडिया. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to make a kiosk design. In addition to that particular design, we have few more buttons you can see in the later section. That is, click here to change the language. Okay, no, अब देखो, according to the intelligence level of the person who has designed this particular kiosk design, so he or she has also thought of the language also, because the person may be हॉस्पिटल है, मे बी कोई फॉरेनर है, कोई विजिटर है, ठीक है, हमारे इंडिया में आया हो, और द पर्सन इज फ्रॉम एनी अदर कंट्री. So so might be he or she is not feasible with the English one. Okay, so if you want to change the language, then you can change it. Okay, then if you are designing it for school, colleges, okay, for urban area, then you can change the language also. You can put it in the Hindi also. Okay, so this is only one thing that the person has included a language option. Okay, अच्छा मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि लैंग्वेज का ऑप्शन भी होना चाहिए, बट लैंग्वेज का ऑप्शन है. Okay, you can keep this option. Apart from this particular option, if you have anything in your mind that this must be included in the hospital kiosk design, or educational campus, or mall,
or any other situation, any other location, so you can add it. Okay, so this is the design, this is the kiosk design, a simple design. They have put it on only one screenshot. Okay, but you don't have to draw only one screenshot, आपको खाली एक नहीं draw करना है. Okay, if you are drawing this particular design, then what you have to do, you have to design for each and every option. Like for new patient, when we click on the new patient, then what are the information, what are the miscellaneous information will be present, must be present in front of the user. तो वो क्या होना चाहिए, उसका एक अलग से डिजाइन. देन फाइंड वर्ड, उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन आना चाहिए, दैट यू मस्ट इंक्लूड विद अ सेपरेट स्क्रीनशॉट, सेपरेट डिजाइन. ओके, देन इमरजेंसी में क्या आना चाहिए, चेक इन में क्या आना चाहिए. क्या आपको लगता है चेक इन नहीं होना चाहिए, चेक इन के अलावा कुछ और होना चाहिए, यू कैन ऐड इट. यू आर द ओनर, यू आर द डिजाइनर ऑफ योर situation. Right now, I'm at this particular place. I want to go to the section, the Ward B ICU unit. Okay. So what would be the direction? So by clicking on the direction, it should show the map also. कि आप ऐसे जाओ आगे, वहाँ से right लो, वहाँ से left लो, वहाँ से right लो, फिर left, आप पहुँच जाओ. So that is the one option which has been provided. So you must show that also. Okay. Information regarding the hospital, information regarding the number of beds which are empty, which are vacant right now. Okay, the number of beds which are total number of beds available, number of beds uh, occupied by patient, number of beds available. So all this information must be present in the information section. Okay, this is a simple, a design. Okay, which I just showed you for your reference purpose. You can have a educational institution kiosk design. Okay, they have shown a logo, एक छोटा सा इमेज यूज किया इन लोगों ने, जिसके अंदर उन्होंने हॉस्पिटल का इमेज डाला. ठीक है, you can have your design, but not in this particular short mode. आपको हर एक option, whatever option you are showing, whatever option you are providing, so for that particular option you have to show a separate image. ठीक है, तो हर एक का, for example, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 total 6 options or buttons they have provided. So you have to provide 6 separate design for these 6 options. Okay, समझ में आया क्या करना है आप लोग को, समझ में आया. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. सो ये वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसमें इतना ही है कि हम लोग क्या डिजाइन बनाना है. So you people in a group, you have to share your topic, what you are selecting for designing a kiosk design. तो kiosk design बनाने के लिए आप जो अपना topic लेंगे, maybe hospital तो अभी सामने है आपके. So you can take any other. Apart from this hospital, you can take any other option. You can take any other topic and just post it on the group. Okay. Project group number, उसके नीचे फिर आपका topic, उसके नीचे नहीं, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और कियोस्क डिजाइन फॉर आपका टॉपिक. ठीक, ये 3 लाइन आपको अपने ग्रुप के बारे में पोस्ट करनी, सो दैट दिस इज फॉर द पीपल, दिस इज फॉर द कॉन्फ्लिक्ट पर्पस. कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना, एक बंदे ने लिया, एक ग्रुप ने लिया एक टॉपिक, so that will not be taken by, because we have lot of options. अभी आप अपने आपने बहुत सारे ऑप्शन दिए मुझे, मॉल में हो सकता है, साइड वे में हो सकता है, सब वे में हो सकता है. ओके, और किसी कंपनी का हो सकता है, किसी रोड पे भी हो सकता है. You can take any option, not a big deal, but you have to design it carefully. ऐसे नहीं कि बट कर दिए डिजाइन, 4-5 डब्बे बना दिए उसमें कर लिए, it's not यहाँ पे. ठीक है, you have to design it very carefully that each and every option will be covered in that design. Okay, और उससे हमारा फायदा होना चाहिए, यूजर का फायदा होना चाहिए, कंपनी का फायदा होना चाहिए, नॉट द नुकसान. Okay, so we cannot bear the नुकसान, so we have to we want profit only. Okay, so with that particular design, because एक एक डिजाइन आपका जो टॉप डिजाइन बनता है, टच स्क्रीन डिजाइन, तो दैट इज कॉस्टली. ओके, सो आप समझ लो, अभी जब इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, so we must require some output also. ठीक है, in terms of profit, so that design must produce some sort of profits for the company. Okay, I think you understood what I just wanted to present. So this is just the output. Let me show you the let me show you the write-up of this, what they have included. See, these are the types of kiosks. Okay, so you can add these
द टाइप्स ऑफ कियोस्क, ऐसे कॉपी करके आपके पास में भेजता हूँ, आप लोग अपना उसको एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट, ठीक है। बाद में आप इसमें से कॉपी भी कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स में डाला। दीज आर जस्ट द ऑप्शंस, ओके। आपको अगर आपको लगता है तो आप अपना कुछ और भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। So an electronic device that provide information is interactive in nature, which is interactive in nature and allows for input. It can be created using HTML pages and graphics. ये तो उसने खाली बस एक definition दिया. You can have your definition, you can have your theory. Application of kiosk in retail, kiosk in banking, kiosk in e-government, whatever. एडवांटेजेस वगैरह ऐड किया है, उसके अलावा फिर कुछ डिसएडवांटेजेस डाला, कंक्लूजन था, तो कुछ खास नहीं है। एडवांटेजेस मतलब हर एक जो भी आप ले रहे हो, वट एवर आप दो तीन क्योस डिजाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या करेगा बता दो, दो चार पांच लाइन में। क्योस इन बैंकिंग, what how it will how it is going to help the banking system, then just explain it. Kiosk in e-government, how it is going to help, कब पता। advantages क्या है, disadvantage, I'm just giving you few points so that we'll understand what you have to include in the writer part. Okay, that's all for the experiment number 5. So I think the experiment number 5 is also very simple. You have to design a kiosk for uh, for any situation, for any place, for any location, whichever you will select, okay, or your group will select, okay. So this is a group activity, so at least take out at least uh, half an hour, okay, 30 minutes are I think enough. You need to decide among yourself only, just decide your topic and इसको डिजाइन करो पेपर पे, एक दूसरे को बताओ एंड जस्ट फाइनलाइज इट। एंड उसको फिर कोई दो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये था हॉस्पिटल का, इन दिस पर्टिकुलर वन हॉस्पिटल यू आर हैविंग सिक्स ऑप्शंस, ओके। तो सिक्स ऑप्शन में से चार लोग हैं, तो तीन लोग मिलके दो दो ले लो, दो दो पे डिजाइन बना लो डॉट डॉट आईओ पे या जहां पर भी आपको बनाना है। एंड आफ्टर दैट कोई एक जन उसका डॉक्यूमेंटेशन निकाल लो, बाद में सबको क्लब कर लो, राइट अप बना लो, अपलोड कर लो, दैट्स ऑल। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड anyone has any doubt in this particular experiment? सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके ऑलमोस्ट सिंपल है, मतलब डिजाइनिंग पार्ट के हैं, कुछ ज्यादा उसमें सोचना नहीं है आप लोग को। अरे बोलो, कुछ और होगा तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। आप लोग भी फ्री, आप लोग अपना कुछ लंच कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा। रुकना है अभी, चलो रुकते हैं।